Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Me and my conscience had a talk today. Told me when I see the trouble, better walk away. Wait, sometimes you gotta space out. Sometimes you gotta change route. Sometimes. What's up guys? I hope you are all absolutely good and fine. Welcome to my channel Only Cinematic. See something cinematic, see something new. बहुत दिन पहले मैं एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैं देखा था कि 10 बेसिक कैमरा शॉट्स यू शुड नो बिफोर शूट अ सिनेमैटिक वीडियो। सो आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक न्यू ट्यूटोरियल लेके जिसका नाम है बेसिक एंगल्स यू शुड नो टू शूट अ गुड सिनेमैटिक वीडियो। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जो लोग मेरा चैनल आज न्यू देख रहे हैं या तो ये वीडियो न्यू देख रहे हैं वो पहले 10 बेसिक कैमरा शॉट्स का वीडियो वो ये देखे उसके बाद ये वॉच करे बिकॉज आपको समझने में अच्छा लगेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Lyrically, I'm such a swordsman. पहला जो एंगल है वो है ग्राउंड लेवल एंगल शॉट। ये क्या होता है, आपका जो कैमरा है वो कैमरा का लेवल ग्राउंड लेवल के पूरा सीधा होगा, मतलब ग्राउंड लेवल के साथ आपका कैमरा बैठेगा। A ground level shot is when your camera's height is on ground level with your subject. The subject can be anything, a human or a thing. This camera angle is used a lot to feature a character walking without revealing their face, but it can help to make the viewer more active and use the actor performance to build an idea. Sometimes Low angle shot. Low angle shot is another most important angle shot you need to know before shoot a cinematic video. This shot frames the subject from a low camera height. These camera shots most often emphasize power dynamics between characters. If I can say the example, low camera shots are a perfect camera angle for signaling superiority or to elicit feelings of fear and dread. You can say that extreme low angle shot is the big brother of low angle shot. This shot frames the subject from an extreme low camera height. It is same as low angle shot, but main difference is the height is much bigger than low angle shot. The main difference of low angle shot and extreme low angle shot is low angle shot can use to make a character role play and extreme low angle shot can use to make both character role play and nature beauty. So यही है जो डिफरेंस है जो लो एंगल शॉट और एक्सट्रीम लो एंगल सेट को डिफरेंट बनाता है। and as long as it's clever, I don't care about. Angle shot is the most important shot in every film industry. The camera points down at your subject. It usually creates a feeling of inferiority or looking down on your subject. It can say the down shot also. So this is the importance of high angle shot. Extreme high angle shot is the same as high angle shot. You can say again and again that is the big brother of high angle shot. The extreme high angle shot is the inferior to high angle shot. Height of the angle is much bigger than high angle shot. The main difference of high angle shot and extreme angle high angle shot is high angle shot used in mostly for character role play. There is 2 or 1 character, but extreme high angle shot is the best for the more character role play in a frame. I'm such a swordsman. Soldier shot and over the soldier shot is another important shot, or you can say that another important angle to shoot a film or cinematic video. A shoulder level shot or an over shoulder level shot is a camera angle that is as high as your subject's shoulders. Shoulders level shots are actually much more standard than an eye level shot, which can make your actor seem shorter than reality. If I can give an example, a shoulder level shot or an over shoulder level shot will make your actors happier than an eye level. Bird's eye view shot. आप लोग समझ ही रहे होंगे कि bird's eye view मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो exactly you understand that because bird's eye view मतलब एक general idea from the above.
An overhead shot or bird's eye view angle is from above, looking down on your subject. An overhead shot does not need to be super high, but it can be. लास्ट जो एंगल शॉट है वो है डच एंगल शॉट। इस शॉट को बताने के पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपका ये वीडियो पसंद आ रहा है तो गिव मी थम्स अप फॉर दैट। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। सो डच एंगल शॉट क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है सेल्फी। आप जब सेल्फी उठाते हो ना तो ऐसे करके उठाते हो ना, जो एंगल मतलब आपका कैमरा, आप अगर कोई किसी कैमरा को थोड़ा सा स्लाइड में पकड़ते हो या तो थोड़ा सा स्लैंड कर देते हो तो उसको बोलते हैं डच। For a Dutch angle, that is Dutch tilt, the camera is slanted to one side, left side or your right side. With the horizon lines tilted in this way, you can create a sense of disorientation. तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच पाए। आप आज 8 बेसिक एंगल के बारे में जाना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई सिनेमैटिक वीडियो शूट करने के लिए। ग्राउंड लेवल शॉट और ग्राउंड लेवल एंगल शॉट, लो एंगल शॉट, एक्सट्रीम लो एंगल शॉट, हाई एंगल शॉट, एक्सट्रीम हाई एंगल शॉट, ओवर द शोल्डर एंड शोल्डर शॉट, बर्ड्स आई व्यू एंगल शॉट एंड लास्टली डच एंगल शॉट। ये 8 एंगल शॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट नाउ इफ यू प्लीज यूज दिस 8 बेसिक एंगल अप्रोप्रिएटली यू शुड एबल टू कैप्चर अ गुड सिनेमैटिक वीडियो। सो प्रीटी मच फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट का ही दिन कोई और न्यू वीडियो लेकर, वो भी मेरे चैनल से कुछ जुड़ा हुआ। तब तक आप मेरे को कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। Keep loving, keep supporting, keep subscribing my channel Only Cinematic. See something cinematic, see something new. Ta-da! Sorta like you gotta get it. Sorta like it's not a riddle. Sometimes